Hmm. Okay. So we have three processes. Introduction of the input is in the process one only. You can see it is process U. Okay. Raw material introduced at the rate of 15 per kg, and in kg it is 60,000. If you multiply it by 15, you will get the cost also. Okay, and output is given. That means you will have abnormal loss or abnormal gain at every stage. Whenever there is an output in the question, you will always be getting abnormal gain or abnormal loss or the equal thing. So there will be no abnormal loss or abnormal gain. But if output is in the question itself, then you will have to compare your normal output and you'll have to get the idea whether you have abnormal gain or abnormal loss. Okay, stock of process output. So you can see there is a stock, opening stock and the closing stock at every stage. So this is something new. There is a opening stock and closing stock. So what you are going to do, you will be having process account, then you will also be making process stock account. Okay, so you will have process account. In addition to that, you will have process stock account. So instead of three process, now three boxes, you will have six boxes. Okay, so for each process there will be process stock account. It is simple, but let's see, we will start with it. Okay, first we will make the process account. As we usually do, the same process will be used here also. Nothing difference. So I will take the process, and process we will be able to complete it by tomorrow. So one chapter will be over in cost accounting by tomorrow. So if there is any doubt related to this chapter, you can always ask, and by today or tomorrow you will be getting other costing lectures also in your YouTube, in your playlist. Playlist is already shared. So we, how means number of videos which have been recorded, you will get it there only. Okay, so I won't be sharing video on a daily basis. Playlist is shared. You mark it, star it. Okay, so or you keep it safe at with you, or better I will be uploading it on the Google Classroom so that you can always click on the link and you can always see the videos directly. So you won't have to search over the YouTube for your lectures. So all the lectures will be there at one place. So playlist is already shared. Okay, the process, first process is process U. Okay. The question number is 29. After this process, we will be making a short table for process U stock account. Okay, and this is what process U account. Correct. And this is what? This is process U stock account. Okay, you can write opening and closing over here. You can write opening here and closing here. Okay, which is already given in the question. Okay, now let's start. We will start with the two input of material. How much is the material introduced in this process? It is 60,000. At the rate of what? 15. So for 60,000, it is going to be 9 lakhs. Okay, it is already given. आउटपुट है, आउटपुट का यूज हम लोग एट दी एंड करेंगे कंपैरिजन के बाद. ठीक है, और इफ यू वांट टू राइट इट नाउ यू कैन राइट इट. ठीक है, बाय आउटपुट ट्रांसफर्ड टू process U stock.
तो ये डायरेक्ट प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस में नहीं जाएगा, ये यहाँ से मूव होके जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग टू द नेक्स्ट प्रोसेस, यू आर गोइंग टू ट्रांसफर इट टू द प्रोसेस स्टॉक अकाउंट, and how much it is going to be transferred? It is 46,500. okay, the value तो आपको पता है, आपको उसके लिए यहाँ पे मैं कुछ breaks रखता हूँ so that we can find out the cost also over here, then this can be valued. Okay, moving on. There is a opening stock and closing stock. You can see in all the process you will be getting opening stock and closing stock. So you will be writing opening stock over here to opening stock, and here you will be writing by closing stock. Okay, there is opening stock 6,000 and opening stock का कभी भी वैल्यू दिया होता है. See, value of opening stock per kg, it is 29. They will always give you. What they will not give, they will not give the closing value. सर क्लोजिंग वैल्यू नहीं दिया है तो क्या करना है? यहाँ पे जो कॉस्ट आती है उसी से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे. सो वी विल वेट फॉर दी कॉस्ट, बट एटलीस्ट जो यूनिट है वो आप लिख देंगे. दिस कॉस्ट विच इज कैलकुलेटेड ओवर हियर इज द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस क्वेश्चन, हार्ट एंड सोल ऑफ दिस चैप्टर. ये कॉस्ट आप पता करने में गलती करेंगे तो आप बहुत गलत में रह जाएंगे, क्योंकि ये कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. अदर देन दिस एवरीथिंग एल्स इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. यहाँ पे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब दिया होता है, नॉर्मल लॉस दिया होता है, स्क्रैप वैल्यू दी होती है, ठीक है. नथिंग इज गोइंग टू बी देयर as a part of calculation except this cost which is to be calculated. Be very careful while calculating that cost. Okay, so after this you have additional information regarding material, means extra material is there apart from the basic material. There is a direct labor, there is overheads, this all information will be there in the question for all the process. Other factory overheads, okay, it will be given in amount always, so you copy and paste directly. 255, then we have labor as 145, then we have machine as 80% of the direct labor. So they have not given the value of the machine, they are saying it should be 80% of the direct labor, and your direct labor is 1,45,000. उसका 80% बोल रहा है. That comes to 1,16,000. Okay, are you guys sleeping? Okay, I'm not getting answer, that means okay. Someone said no sir, we are not sleeping. Very good. Okay, other factory overheads 1,68,000. Okay, Muskan also said, Iram also said, sir, we are not sleeping. Good. But other than you three, all are sleeping. No, all other are sleeping. So that's what I'm not talking about you. Okay. Here it is going to be as usual. जैसे हम लोग पूरा process account अब तक के बनाते हैं. Format is always same. Normal loss is given in the question. Normal loss आपका 20% है. And you know normal loss किस पे calculate होता है? It is calculated on the unit input. Okay, 60,000 का 20% is the normal loss. Okay, correct है. 20% is the normal loss.
तो 60,000 का 20% is going to be 12,000. Okay, and scrap value will be given in the question. As I said, always it is 12 per kg. So into 12, you will get it. Any doubt? Okay, normal loss completed. Now see, you have introduced 60,000. You have normal loss as 12,000. And if you see, there should be normal output of 48,000. But आप आउटपुट देख सकते हैं कितना है 46,500. सी अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में इतना डिटेल में नहीं जाना है और आउटपुट अगर आपके क्वेश्चन में दिया है तो आप नॉर्मल टैली करो. टैली करेंगे ना तो आपको दोनों जगह देखो अमाउंट जो है वो अलग अलग आता है, यूनिट जो है वो अलग अलग आता है ना. दैट मीन्स ये दोनों टैली ही नहीं होगा, है ना. यहाँ पर कम है, कितना कम है आप देख सकते हैं. वो आपका नॉर्मल इधर इधर पे अगर आएगा तो लॉस होगा, यहाँ पर अगर आएगा तो गेन होगा, है ना. तो इट इज 1500. देखो जैसे आपने 1500 डाला ये यहाँ पे टैली हो गया. एंड दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? एबनॉर्मल लॉस. तो ऐसे भी पता चल जाता है कि एबनॉर्मल लॉस है एबनॉर्मल गेन, है ना. और ऐसे भी पता चल जाता है कि नॉर्मल आउटपुट निकालो. मैं क्यों आपको नॉर्मल आउटपुट निकालने के लिए बता रहा हूँ? बिकॉज क्वेश्चन में आपको पूछा होगा डायरेक्ट अगर कि नॉर्मल आउटपुट क्या होता है, तो यू शुड नो कि नॉर्मल आउटपुट किसको बोलते हैं. नॉर्मल आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट that is 60,000 minus normal loss that is 12,000 is equal to 48,000. ठीक है. अगर 48,000 होना चाहिए था और है नहीं, उससे कम है, तो देयर इज अ लॉस ऑफ 1,500. वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया. वैल्यूएशन के लिए आपको पता है हम लोग को कॉस्ट के लिए वेट करना पड़ेगा. एंड कॉस्ट इज कैलकुलेटेड विद दिस फॉर्मूला. Okay, I pasted it over here. We will make a changes on the debit. You all you know हम लोग यहाँ से 9 lakh plus 2,55,000 plus 1,45,000. What we are adding? We are adding the debit side of the amount. 1,16,000 plus 1,68,000 minus यहाँ पे क्रेडिट साइड के जो अमाउंट में नॉर्मल लॉस होगा वो माइनस करना है. ठीक है. एंड डाउन इट इज गोइंग टू बी 60,000 माइनस 12,000. दैट इज यूनिट वाला कॉलम. ठीक है. यूनिट में से नॉर्मल लॉस को माइनस करना है. ये आया था 48,000. The answer is 30. Okay, Afreen got the answer as 30. Very good. Okay, so this 30 कहाँ यूज करना है आप? इसके साथ में, इसके साथ में. Now you tally them, it will die. Okay, got it? Any doubt, any question, any concern? Okay, Muskan also got the answer. So these three students are not sleeping. Afreen, Iram, and Muskan is not sleeping. Okay, others may be sleeping. I don't know. How to know now? We can't do anything for this. Okay, there is nothing new. अब तक कि मैंने कुछ भी न्यू नहीं बताया है ना. As usual, we have introduced material. We have got all the cost over here, normal loss over here. By comparing from the output, we also got the abnormal loss. Okay, give us reward. Okay, yes, you guys deserve it. Okay, I hope
by this month you will be getting a good news that our college is also starting. So maybe the attendance I have seen in offline lectures were always more than the online lectures, and participation also of the student was good in offline lecture. So school is opening from Monday. That means college will also be opening very soon. So let's wait. Okay. So from here, it is going to be transferred to here, the output of that process to, okay. Now, how to value this closing stock? It is always valued on the weighted average cost, that is into 30. ठीक है, मैंने इसको भी into 30 किया है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे आया। ठीक है, मैंने सबको वेटेड एवरेज कॉस्ट से ही मल्टीप्लाई करके मारा। ठीक है, नाउ इसको टैली कर दो। इट इज ऑलवेज ग्रेटर ऑन द डेबिट साइड, इट इज ऑलवेज ग्रेटर ऑन द डेबिट साइड। फॉर्मूला था, ठीक है, लिख देते हैं 52,500। ओके, नाउ हाउ मच डिफरेंस यू आर गेटिंग, that you need to see, that is 45,000 by transfer to process P ना, next process is P। अमाउंट कैसे मालूम करेंगे, सेम टैली करेंगे। इधर पे नहीं लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला रहेगा तो कॉपी हो जाएगा, तो मैंने टाइप कर दिया है इसको, सेम है दोनों भी। ओके, जो डिफरेंस आ रहा है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज बैलेंसिंग फिगर, है ना, हमने टैली करके लेकर आया है। यहाँ पे प्राइस वगैरह कॉस्ट वगैरह मालूम करने की बेटा जरूरत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है, हो गया। सो दिस इज दी प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। बी वेरी क्लियर विथ इट दैट यू आर अवेयर दैट हाउ टू प्रिपेयर स्टॉक अकाउंट। क्या किया है, ओपनिंग स्टॉक का यूनिट भी दिया था क्वेश्चन में और रेट भी दिया था। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट दिया था बट उसका कभी भी कॉस्ट नहीं दिया है, तो जो हमने कॉस्ट यहाँ पे निकाली है उसी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आउटपुट यहाँ से ट्रांसफर हुआ है तो यहाँ पे आएगा, वो मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। और सिर्फ सिंपली क्या कर देना है, टोटल कर देना है। बैलेंसिंग फिगर जो आएगी आपकी वो आपका नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा। एनी डाउट, एनी डाउट? फर्स्ट वी विल कंपेयर वी आर ऑन द राइट पाथ और नॉट। ठीक है, वेरी गुड, वी आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। तो आई विल कॉपी दिस ओनली, although we have made so much of correction, but let's keep the same format except this amount and except this also, this also, delete this also. Someone has unmuted, so please mute yourself. ठीक है, so I will remove this, है ना, so even this, so there should be no confusion now. Okay, stock also I will copy from here and paste it right below here. This is process P stock account and this is process P account.
ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो एडिशनल आता है वो आपका प्रोसेस स्टॉप अकाउंट आता है। ठीक है, ये सारी फिगर्स मैं निकाल देता हूँ सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन हियर आल्सो। ओके ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ प्रोसेस पी। इनपुट इसका कहाँ से होगा, जो यहाँ से ट्रांसफर हुआ है वही आपको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। इधर पे लिखना है टू ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस यू स्टॉक। यू स्टॉक से यहाँ पर आएगा। ठीक है, कितना आएगा, यहाँ से कॉपी होगा, यहाँ पे पेस्ट होगा। ठीक है, दिस इज द इनपुट। ओके, स्टॉक प्रोसेस 45 और ग्रेट। ओके, नाउ what you will do, go back to the question and write material, labor and overheads over here. ठीक है, for process P, हाँ इस बार process P लेना है आपको। Process P का material you can see 5,40,000, then 1,05,000 is the labor. They want 150% of other factory overheads, machine overheads के लिए। other factory overheads जो है वो 2,25,000, ठीक है, एंड मशीन ओवरहेड बोल रहा है कि 2,25,000, दैट इज अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स का 150% निकालो। सिंपल यही बोला है, 150% ऑफ दी अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स आपका 2,25,000 है। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी 2,25,000 का 150%। ओके, now normal loss will be given in the question itself, आप वहां से ले लेंगे। नॉर्मल लॉस जो है वो इसके ऊपर कैलकुलेट होगा 45,000 पे। कितना है नॉर्मल लॉस? नॉर्मल लॉस इज 30% नाउ इन दिस प्रोसेस। 45,000 का 30%। बेटा अटेंडेंस के लिए आप लोग प्रॉपरली रोल नंबर्स को वैल्यू कर, ठीक है, इसको स्क्रैप वैल्यू से माइनस मल्टीप्लाई करके मालूम कर लेंगे। स्क्रैप वैल्यू इज 14। ओके, दिस इज आल्सो डन। आउटपुट देखेंगे क्वेश्चन में कितना है। प्रोसेस आउटपुट इज दिस 31,000, हियर इट इज गिवन आउटपुट इज 31,000। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 45,000 टोटल में आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है वो देखना है। ओके, 500 कम पड़ रहा है। 500 जो कम पड़ रहा है वो किस वजह से कम पड़ रहा है बेटा? बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, ओके, सेम यहाँ पर हम लोग नॉर्मल आउटपुट मालूम करने की जरूरत हमेशा होती नहीं, आप डायरेक्ट टैली करके भी एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन पता कर सकते हैं, या फिर प्रीवियसली जैसे मैंने आपको बताया वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉस्ट मालूम करेंगे 1344 प्लस 5,40,000 प्लस 1,05,000 प्लस 3,37,500 प्लस 2,25,000 बराबर है क्या सर? और यहाँ पर नीचे 45,000 माइनस यहाँ का 13,500। ठीक है, and here it is so answer is 81. okay, very good. मुस्कान ने तो पता नहीं कहाँ तक के आंसर लिखी है। ओके, सो
multiply them with 81 here also, multiply with 81 here also, and it will tally. ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला मैंने लगा दिया है और यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे भी कॉपी कर लूंगा। अरे बाप रे, ये टैली नहीं हुआ बेटा, क्यों? वाई? अच्छा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, हमने यहाँ पर अमाउंट माइनस नहीं किया है, 189 है ना, खाली डेबिट साइड का तो ऐड कर लिया है ना, 75 तो जाके टैली हो जाए। ठीक है, ओके, नाउ इट इज गेटिंग टैली। सी, अगर रॉन्ग हुआ तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपने कहीं तो रॉन्ग किया है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल लॉस के लिए कभी भी भूल जाते हैं हम, डेबिट का ऐड करते हैं बट नॉर्मल लॉस माइनस नहीं करते। मैं खुद कितनी बार ये गलती करता हूँ, आप मत करें। ठीक है, ये जो है यहाँ से कॉपी कर लीजिए आप और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, यहाँ का जो आउटपुट है यहाँ पर आ जाएगा। ओपनिंग और उसका यूनिट क्वेश्चन में दिया रहता है। ओपनिंग यू कैन सी 5000 इज गिवन और प्रोसेस P, और 5000 का यूनिट्स भी आपको ओपनिंग का यूनिट दिया होता है क्वेश्चन में, एडिशनली 70 दिया है, वो भी ले लो आप। ठीक है, क्लोजिंग भी आपके क्वेश्चन में है, आप देख सकते हैं क्लोजिंग है 6000। इसका यूनिट हमेशा जो आपका वेटेड एवरेज जो ऊपर आया है 75, वही करना है। यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, 6000 मल्टीप्लाई बाय 75। नाउ टोटल देम, यहाँ पे भी 36,000 आएगा, तो यू कैन सी बैलेंस में 30,000 बचा। ठीक है, टोटल ईयर और दोनों जगह पे लिखो 267,500 और यहाँ पर आप 4,50,000 माइनस करो, आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ओके ओके, सो गॉट इट, यस, थैंक यू। मुस्कान के बहुत सारे मैसेजेस। टुडे 2 गर्ल्स आर वेरी एक्टिव, वन इज आफरीन एंड वन इज मुस्कान। आफरीन वांट रिवॉर्ड, तो हम कॉलेज ओपन करके रिवॉर्ड भी देंगे, टेंशन मत। ठीक है, स्टॉप। एंड आई होप सब लोगों ने अपने आप को प्रॉपरली रीनेम किया है। सो आई विल नाउ स्टार्ट टेकिंग द अटेंडेंस। 48 ही लोग हैं तो इतना टेंशन नहीं है। 49 हो गए, मतलब अटेंडेंस के टाइम पे कोई ज्वाइन करता है। वाह, अब ये देखने वाली बात होगी कौन ज्वाइन करता है। ठीक है, ओके, रोल नंबर 3 इज प्रेजेंट। 6, आप लोग पहले ध्यान से पूरा खत्म होने देंगे क्योंकि एंड में भी आपका रोल नंबर आ सकता है, बीच बीच में आपको नहीं डालना। 13, 22, 33, then we have 38, then we have 42 and 48, then we have 52, then we have 67 and 74, 67 and 74। अगर बीच में आपका रोल नंबर छूटा है तो मे बी एंड में आएगा, बिकॉज वो नंबरिंग प्रॉपर नहीं है, इसीलिए डोंट वरी अबाउट इट। अगर एंड तक के आपका नहीं आया देन पुट इट इन द चैट बॉक्स प्लीज, उससे पहले कुछ मत करो। 85 and 86, 85, 86, 89, then 94, 97, 100, 102, 101,
110, 115, 116, 117, 121, 23, 125, 127, 133, 134, 136, 138, 139 is also there, 141, 145, and in between 16 came. See, अगर आप प्रॉपरली 3 डिजिट का नहीं लिखोगे तो ऐसे ही होगा, तो 16 को मार्क किया है. 166, 169, 170, then we have 171 and 174, 194 is there and 198 is there. मुझे रोल नंबर 46 दिख रहा है और 45 दिख रहा है, बाकी लोगों का रोल नंबर नहीं है तो मैं मार्क नहीं कर पाऊंगा, तो 45 एंड 46. ओके, 45 मैंने मार्क कर लिया है, इसलिए मैं बोलता हूँ लास्ट तक की वेट करो. आफरीन का 64 है. ओके, मार्क हो गया. उसके बाद मुस्कान का 35 है. ओके, ये भी मार्क हो गया. someone saying roll number 11 is there. ओके, ये तो प्रेजेंट है रोल नंबर 11. 17, ओके 17 प्रेजेंट है. ओके, 45 बता दिया मैंने ऑलरेडी. 64 भी मार्क किया है मैंने शायद अभी. हाँ, अभी मार्क किया है. 33 भी किया है मैंने, सुनते नहीं हो आप लोग.